Hello students, welcome to Learn Classic Education. So today's topic is Indian Lunacy Act. Coming to the introduction, it's a mental health laws protect the rights of people with mental illness. The Indian Lunacy Act, it was started in 1912, was India's first comprehensive mental health law. It mainly focused on the custody and care of mentally ill person. So those who are in custody means those who are in prison or in jail, and mentally ill persons, the care is taken of. It was later replaced by the Mental Health Act 1987. The Mental Health Care Act 2017 is the current law in India. So the Lunacy Act, Indian Lunacy Act was started at the year 1912. Then it was replaced by Mental Health Act in the year 1987, and finally it is been replaced by current law, that is Mental Health Care Act of 2017. So the Indian Lunacy Act 1912, it enacted during British rule, regulated admission and detention of mentally ill person, established psychiatric hospitals like we say asylum, जहाँ पे mentally ill patient को लाके रखा जाता है, उनका treatment होता है और उनको further cure किया जाता है. Focused more on public safety than patient rights, had limited rehabilitation provisions. Now moving on to the Mental Health Act of the year 1987. So it was replaced the Indian Lunacy Act 1912. It regulated admission, treatment and discharge. ये एक्ट में क्या क्या ऐड हुआ है? एडमिशन होगा पेशेंट का, उसका ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज भी प्लान होगा. प्रोटेक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ मेंटली इल पर्सन, एस्टैब्लिश्ड स्टेट मेंटल हेल्थ ऑथोरिटीज, इम्प्रूव्ड रेगुलेशन ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स. देन द फाइनल वन, that is the Mental Health Care Act 2017. This is working in the current mental health law in India, promotes a rights-based approach. It mostly look onto the patient's right, ensures access to affordable mental health care. Mental health care जितना patient तक reach होगा, ठीक है, उसके ऊपर ये ध्यान देता है. कॉस्ट के ऊपर भी ध्यान देता है कि ये अफोर्डेबल होगा कि नहीं. इट प्रोटेक्ट्स द डिग्निटी, इक्वलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. सो ये पेशेंट का जो डेटा है उसको ये प्रिजर्व करने में भी ये देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रहे, कि कोई भी डेटा किसी के परमिशन के मैंने विदाउट परमिशन ये लिखना हो. देन डीक्रिमिनलाइज्ड अटेम्प्टेड सुसाइड. तो ये सुसाइड जो है, द वर्ड डीक्रिमिनलाइज्ड मीन्स ये जो करते हैं सुसाइड अटेम्प्ट्स, तो उनको क्रिमिनल लॉ के अंदर ये नहीं पकड़ते, इनको कोई पनिश नहीं करेंगे अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया, रादर उसको काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, इसका कोई पनिशमेंट नहीं होगा. So the objectives of the Mental Health Care Act 2017, it protects the right of the person with mental illness. अगर कोई पेशेंट अपना कोई बात बताना चाहता है, ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता है, या कोई मेडिकेशंस लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, तो ये सब उनका राइट्स है, इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं. Ensure accessible and quality mental health care, ताकि ये एक्सेसिबल हो, सबके रिच में हो. It promotes community-based rehabilitation, prevent discrimination and abuse. ये कोई भी कास्ट या
क्लास ऑफ द पीपल, ठीक है, हायर क्लास, लोअर क्लास, कोई भी कास्ट, ऐसे ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, ये सब के लिए एप्लीकेबल है. Improves quality of mental health services. What are the rights of person with mental illness? Right to access mental health care. ये easily available हो सकता है, होना चाहिए सबके लिए. Right to live with dignity. कोई भी इनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट करेगा जस्ट बिकॉज ये मेंटली इल है या मेंटली रिटार्डेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी. जो बात मेंटली इल पर्सन शेयर कर रहे हैं वो किसी को भी पता नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट द हेल्थ केयर वर्कर्स, दोज हु आर कलेक्टिंग द डेटा. राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट. कंसेंट भी ये दे सकते हैं अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से. राइट टू लीगल एड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इनह्यूमन ट्रीटमेंट. अभी जैसे रिसेंटली पेशेंट को हम लोग डीएस्केलेट करते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग रादर देन रिस्ट्रेनिंग. सो ये भी देखा जाता है कि इनह्यूमन ट्रीटमेंट पेशेंट के ऊपर ना हो. नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द एडमिशन प्रोसीजर्स. इंडिपेंडेंट और वॉलेंट्री एडमिशन. पेशेंट अगर उनको पता चल रहा है तो वो खुद आके भी एडमिट हो सकता है या दिखा सकता है डॉक्टर को, काउंसिल करा सकता है. सो दैट इज अंडर दिस लॉ. सपोर्टेड एडमिशन व्हेन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इज इम्पेयर्ड. अगर पेशेंट खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो कोई आके उनको हेल्प कर सकता है एडमिशन लेने में. दिस इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. एमरजेंसी ट्रीटमेंट इन एमरजेंसीज, like the patient is completely out of control, so in that situation emergency treatment applicable hai. Periodic review of admissions, discharge according to legal provision. Then what are the role of nurses? To assess the mental status. First, being a nurse you have to assess patient's mental condition. Provide compassionate and safe care to remove all the sharp particles जो भी उनके बेड साइड में होगा, या फैंस में भी कवर लगा हुआ रहता है, कोई भी रोप्स, शार्प आर्टिकल्स, मेडिसिन बेयर साइडेड ऐसे नहीं रखना चाहिए पेशेंट के साइड में. मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. वॉट एवर द पेशेंट इज शेयरिंग, ये सिर्फ जो नर्स को शेयर कर रहे उन्हीं तक वो ही जानेंगे, ना कि वो सबको बताएंगे कि पेशेंट को क्या हुआ है. ये सब नहीं होना चाहिए. Educate patients and families. We have to educate the patient and the families for giving support to the patient rather than to leave the patient alone. Okay. Then protect patients' legal rights and document care accurately. Documentation is very important. Then the significance, it protects human rights, reduces stigma. Like mental illness, people thinks that it should not be expressed or they should not tell in public, they may be judged. Okay, so this is a stigma, social stigma. So it is reducing, this healthcare act is reducing this, helps in reducing the stigma. Encourages early treatment so that the patient prevents from further deterioration. Improves quality of mental health care, as because mental health care is very much important for everyone's life. Promotes rehabilitation and community integration. So today we have discussed about the Indian Lunacy Act 1912 was the first mental health law in India. It was replaced by Mental Health Act 1987, and then the final one came, that is Mental Health Care Act of 2017, that is the current law. The 2017 Act focuses on patient rights, dignity, informed consent and accessible mental health care. Nurses play a vital role in implementing the Act and advocating for patients. So being a nurse, you always have to take care of patients' mental health, keeping the data confidential, looking for the safe environment and preserving the dignity and rights of the patient. Thank you.